Good morning. Yes, Mukul sir, can you hear me? Hello, Ikharkar sir. Good morning. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. We are just waiting for 5 minutes, sir. Okay. Not an issue. Okay. Panse. Sunil sir, good morning. Yeah, good morning, sir. In fact, we'll start exactly by 10:30. Okay. Yes. And one other thing is, after your session, there will be session by Dr. Madhvi Kulkarni. She is Vice Principal of SNDT Women's University Pune, right? Okay. So we have to wind up by 11:30. So you can do is 45 minutes. You can continue with your session. Okay. And followed by 15 minutes for question and answer. If Okay, not an issue. there are any. Okay. Actually, it is very difficult for me to wind up within an hour. Yeah, I know that. Actually, we are typically teachers.
Yes, 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 To yes. have a habit But I of will, 1.5 hour. yeah, Most of I the will time, skip some slides of my PPT and I will try to wind up yeah, with okay, 45, okay, fine. 45 minutes, sir. Dr. Atul sir, hello. हाँ sir, good morning. Good morning, sir. We can start with the teaser. It's Okay sir, almost okay. Yes. 10:28. I think within a minute's time you can start with teaser because few of the participants they have already joined, and YouTube also. Can you please share that link on Research Mentor 2 on WhatsApp? Yes sir, I'm sharing it. Okay, and share it to your other groups also. Yes sir, already shared it. I'm Okay. going to send it on Research Mentors group. Especially YouTube link. Okay, okay.
Sir, we can start, sir. You can start with the teaser. Okay. After that, it will be past 10:30. We can start with introduction of Dr. Sunil Ikharkar, sir. Okay. It will be a great pleasure to introduce one of our resource persons, Sunil Ikharkar, researcher, teacher, trainer, and author. Dr. Ikharkar believes in continuous learning. He holds 6 formal degrees: PhD, MCom, MBA, postgraduate diploma in International Business Operations, LLB, and BSc. Ikharkar comes with more than 15 years of overall experience in teaching, administration, working in the insurance sector. He has gone through subjects like business law, marketing management, insurance, banking, capital markets, derivatives, mutual funds, and many more. Dr. Ikharkar is presently the head of NEP department at Govindrao Vanjari College of Engineering and Technology, Nagpur since last 11 years and has handled various administrative and teaching responsibilities. Prior to this, he was a visiting lecturer at Priyadashini Institute of Technology and Engineering, Nagpur. He has also been a consultant trainer at ICICI Priority Circle, Nagpur. He was a branch manager at Tata Finance Limited. He has also worked briefly as business associate at Motilal Oswal Securities Limited. Dr. Ikharkar is an approved insurance trainer certified by Insurance Regulatory and Development Authority. He also holds Bombay Stock Exchange's certification on financial markets. He is also certified by National Stock Exchange on various products on financial markets. Dr. Ikharkar is also appointed as counselor and assessor by Indira Gandhi National Open University. He is also an assessor and inspector for Confederation of Indian Industries. Dr. Ikharkar has published many research papers in areas of management and insurance. He has presented his research work in more than 10 conferences and workshops. He has also published few textbooks on management subjects. We are truly privileged to have Dr. Ikharkar with us today. I appeal to the students to make the best use of this session. Thank you. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Dr. Sunil Ikharkar, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. I welcome all the participants and researchers in our today's 7th day of FDP. That is the last day. In today's session, our resource person is Dr. Sunil Ikharkar. I would like to request Dr. Sunil Ikharkar, sir, to please proceed for his presentation. Over to you, sir. Thank you. Yes, sir. Sir, before we go ahead with the presentation of Dr. Sunil Ikharkar, I would like to add certain thing to his introduction because his introduction was made a few days back. Now, actually, currently he is working with not with WGCT, that is Govindrao Vanjari College of Engineering and Technology, but he is working with Kamla Nehru Mahavidyalaya as an associate professor. That is one of the correction. In fact, he belongs to same group only. It is not a different group. Yes. Welcome, sir. Welcome to the 7th day. And in fact, you are going to be the closing batsman for today's show.
Welcome, sir. And you may please proceed with your presentation. How many runs I have to score in a In single fact, ball? I want at least a century because that is what we need. Okay. Fine. For 2020, because short of time we are having. Exactly. I have to play 2020 today. Okay. Yes, fine. Okay. So आपने मुझे host बना दिया होगा, hope so. If I am the host, I can share, or co-host, I can share my PPT with all you guys. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, definitely. Okay. Wait a minute, please. Can you see my PPT on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Mukul sir? Yes, sir. It is visible, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Visible, sir. Okay. All you can do is just enlarge the screen. Actually, you're taking your mobile. I'm trying. Yes. You have to keep the mobile on rotation mode so that the PPT will look elongated. Yeah, put it on rotation mode. Okay. You are sharing it on mobile? Yes. So you just go to your setting and put the mobile on rotation mode. Yeah, I have done it, sir. I have done it. Okay. Yeah. I think it is visible now properly. Yeah, it is visible, sir. Don't worry. Yeah. Okay. Yeah. So good morning, all of you. I think in today's session, my audience is faculties and my dear students also, right? So actually, as Mukul sir said, I have to wind up the session in 45 minutes. And for this particular today's topic, that is fundamentals of investment planning for sustainable life, actually I need 45 days. But I will try my level best to wind up within 45 minutes. It's really a difficult task for me and a challenge in front of me. Initially, I was thinking, being as a FDP program, there will be faculties only, but there are so many students also there. So, from my point, I will try my level best to explain it in a very easy way. For that, I need to skip some slides also because initially I have planned this PPT for faculties. So there are so many technical terminologies are there, but still I will skip and I will try to manage my level with the students. Okay, so this is what my first slide. I am starting with the quote of J.M. Barrie. See, the life of every man is a diary in which he means to write one story and writes another. And his humblest hour is when he compares the volume as it is with what he ought to make it. हमारी भाषा में हम समझने की कोशिश करें, हर इंसान अपने लाइफ में स्टोरीज ऐड करता है, एक के बाद एक स्टोरीज को जोड़ता है, नए नए चैप्टर्स को जोड़ता है. बट जब वो उसको एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि यार हम सिर्फ स्टोरीज बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमने कोई सक्सेसफुल स्टोरी या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बनाई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. सो दैट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न कि देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड व्हेन वी आर हैविंग अ मनी वी आर वेरी मच ईगर टू इन्वेस्ट. बट really we are investing in a proper way or not? This is a big question, or this should be a question in front of anybody. What are the investment horizons available which is proper, really suitable for you, and right, how much knowledge you are having, or what basic things you should know before investing? It's really a need of an hour.
But unfortunately, when we go for investment, people just want to invest. But in my opinion, we must try to understand what is investment really. So, from student point of investment, I can say investment takes place when an investor postpone his or her consumption, which is initially converted into saving and subsequently into investment. मतलब हमारे फ्यूचर की नीड को प्रोटेक्ट करने के लिए sometimes a very good example nowadays, initially even employees were getting the pension, government employees were getting the pension, but after 2005 government has almost cancelled. There are some provisions regarding pension, that's why I'm using the word almost, but the days are not like earlier days. Everybody has to take care of his future, because he knows that after his retirement he won't get a pension, or he will get a very little amount of pension. So that's why nowadays it's a need of everybody to save some money from his income and then to convert that particular savings into investment. It's very important. And beside of this saving and investment, the why we need the proper investment option, because simply if anybody doesn't know about any investment option, so he will simply go for saving bank account or FD, right? But it's a really a big question in, or it should be a question in front of any investor, that whether he is going to cope up with the inflation rate. For example, if nowadays we are getting simply 2-3% saving bank account interest rate, or if we are converting it into a FD, so we are hardly getting into nationalized bank. A few days before I have converted my saving bank amount into one FD. So I'm getting a 5 point something, 5.2, 5.5, 5.5 as a safe investment in a nationalized bank. But the question should be in front of me, ki whether this particular growth of 5% or 5.5% will cope up with my inflationary needs. Because nowadays on an average we can see from last few years at least we are facing 7 to 8 inflation rate, right? So at least what is my suggestion, कि you should try to earn some smart amount of money so that your amount should be utilized in future. यानी आज आपका जो 5,000 है, ये एक साल बाद भी आपको उसी वैल्यू, अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉरी इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट वो 5,000 Sir, you are not audible. that's why we need to postpone our present needs. Actually, there is a question, why should a person postpone his present consumption? Saving or investment is what we are compromising our today's consumption. And we are saving some amount out of that and we are converting it into investment for our future needs. That is what really investment we can say. But actually, why should a person should do this particular compromise? In actually, in my opinion, the person should not compromise. He should enjoy his life. But exactly, we cannot go by that way. We are having some examples. Might be my students are not knowing about it, but the faculties are concerned. There is a very famous example, that is example of Rahul Mahajan. Rahul Mahajan, I am quoting here because everybody knows Honorable Pramod Mahajan ji, or he was late Honorable Sri Pramod ji Mahajan. He has earned a lot of respect, lot of money, right? But his son was very, uh, you can say he was very famous due to his activities. Means people were saying कि यार इतने बड़े आदमी का लड़का, पिताजी ने इतना पैसा कमा के रखा है,
बट लड़का उस ट्रैक पे नहीं जा रहा है, राइट? ही इज, बट इन माय ओपिनियन लोग उसको भले ही बेवकूफ समझे, लेकिन कैसा है कि इन माय ओपिनियन दैट टाइम, व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डेट टाइम ऑफ द प्रमोद महाजन जी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम। एंड जो भी कैलकुलेशंस है एक पॉलिटिशियंस के लिए, वो शायद वो समझने के लिए और उससे बाहर आने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए शायद राहुल जी या राहुल महाजन जी ने जो डिसीजंस लिए, ये एक स्क्रीन के पीछे की स्टोरी होनी चाहिए। आई आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैं जज कर रहा हूँ चीजों को, जो मेरा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपको ये दुनिया में अगर जीना है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो कहीं ना कहीं वो स्टोरी होगी, और वो प्रमोद महाजन जी के बेटे का है ना, राहुल जी महाजन का एग्जाम्पल हमेशा मेरे सामने आता है कि व्हाई शुड वी कॉम्प्रोमाइज। मैं तो बोलूंगा राहुल जी इज एंजॉयिंग हिज लाइफ बिकॉज उनके पास पैसा है, और वो पैसा वो एंजॉय करना जानते हैं। लाइक लोग, सारी दुनिया पैसा कमाने के पीछे भागती है, और वो पैसा कमाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन अगर नहीं कर सकते तो पैसा कमाने का क्या यूज है? तो दिस इज व्हाट माय व्यू ऑफ लाइफ, कि पैसा कमाओ लेकिन आपको उस पैसे से एक अपने लिए, खुद के लिए एक एंजॉयमेंट खरीदते आना चाहिए। आपने एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी लाइफ जीना चाहिए और एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बट वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि हम ऐसे एक बड़े आदमी के बेटे शायद नहीं हो सकते, हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो हम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि आदमी अगर एक 50,000 1 लाख रुपया कमा रहा है वो, तो उसको अपने एक नॉर्मल लाइफ से बाहर निकल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, उसको अपने फैमिली के बारे में सोचना होता है। और इसलिए हमको आज हमारे करंट कंजम्पशन पे कंट्रोल करना जरूरी है, उसमें से सेविंग में उसको कन्वर्ट करना है, और दैट सेविंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एन इन्वेस्टमेंट। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे सामने है। देखो, हम बैंक डिपॉजिट्स में जा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज में से एनएससी, दैट वाज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इट वाज अ वेरी old traditional and popular format. Then PPF is there, stock market, mutual fund, gold deposit, real estate, private equity, and n number of investments are there. But एक लेमन या हमारे आज के प्रोग्राम की जो फैकल्टीज है, जिनके लिए हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो जब हम फैकल्टीज या हमारे स्टूडेंट्स है, जो लर्नेड स्टूडेंट्स है, कुछ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप नॉर्मल एक लेमैन के जैसे मत सोचो, आपको कुछ अलग सोचना जरूरी है। एक फैकल्टी है, इफ अगर वो फाइनेंस की फैकल्टी इज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, और जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस की प्रिंसिपल हो, अपने आप में एक फैकल्टी, ही इज अ लर्नेड पर्सन, और एनी एम्प्लॉय ऑल्सो ऑफ एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक बोलो या कोई गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉय बोलो, तो ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और इन्होंने अपनी जरूरत को समझना चाहिए, अपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका इनको थॉरोली, दे मस्ट नो द प्रॉपर रूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेमैन तो क्या, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बैंक में पैसा रखता है, ज्यादा से ज्यादा वो ही में कन्वर्ट हिज मनी इनटू एफडी एंड सिटिंग कीप क्वाइट। बट एक पढ़े लिखे इंसान ने, व्हाट आई विल सजेस्ट, कि ये जो इतने सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस है, राइट, ये ऑप्शंस में आई विल हाईलाइट इंश्योरेंस पॉलिसीज, देन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, और अभी हम कई सालों के बाद देख रहे हैं कि गोल्ड में भी हमको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर ने, मैं इंश्योरेंस को यहाँ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इन्होंने हमेशा ही, और जो थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं रियल एस्टेट में जाते हैं। बट रियल एस्टेट में जाने के पीछे हमको इनिशियली बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। हमको अगर किस्त पे भी प्लॉट लेना है तो पहले 1 लाख 2 लाख एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है, और बाद में 25-30 हजार रुपए एक अच्छे प्लॉट के लिए हर महीने में इन्वेस्ट करना है।
तो या फिर अगर हम एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट अगर मैं इसमें स्मार्ट वे अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने नॉलेज का, अपने स्टडी का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो दिस स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यानी ऑब्वियसली इंश्योरेंस ये आपकी नीड है। मैं इंश्योरेंस को इसलिए हाईलाइट करता हूं हमेशा कि इंश्योरेंस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली इट इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर लाइफ और अदर थिंग्स, राइट। तो रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। बट एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि इंश्योरेंस में वो ताकत है, वो पावर है। आज अगर कोई बंदा 50 लाख का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रहा है और भगवान ना करे उसकी 15 दिन बाद या 4 महीने में या 2 महीने में, 1 महीने में, 2 दिन बाद डेथ हो जाती है, तो दिस ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन कि जहां आपको 50,000 रुपये प्रीमियम भरने के बाद 15 दिन में अगर आपकी डेथ होती है, तो 15 दिन में 50,000 का 50 लाख रुपए आपके घर वालों को मिल जाता है। So that's why it's a very simple, it's very simple calculation कि life is having a is having a lot of risk, and risk है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्क को कवर करने के लिए, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारे अनएक्सपेक्टेड, हमारे जाने के वजह से जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, उस लॉस को कवर करने का इससे अच्छा कोई अदर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैं अगर इंश्योरेंस बेचने जाऊंगा मार्केट में, तो ये एग्जांपल शेयर करूंगा कि दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच कैन गिव यू 50 lakhs rupees in lieu of simply 50,000 rupees, even after 1 week or 15 days, if your death occurs, right? So that's why we cannot ignore insurance also. उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड में उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि जो लोग वे आर वेरी न्यू टू द stock market, even they in the learning mode, they don't know how to invest, how to create their portfolios or their investments। तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है, बिकॉज देयर आर फंड मैनेजर्स, वो आपका पैसा आपके बिहाफ में कुछ नाम मात्र फीस लेकर आपका पैसा अच्छे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके आपके पैसे को ग्रो करेंगे, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए। बट स्टिल अगेन आई विल insist you all the guys, those who are having a very good qualification, very good knowledge, right? तो जिनके पास एक सत्सद विवेक बुद्धि है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हम पूछे हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो या टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, तो हम वॉरेन बफेट या बिल गेट्स इनको कभी बोल नहीं सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि अगर हम बिल गेट्स या वॉरेन बफेट की बात करते हैं, या ये जो रिचेस्ट पर्सन है, ये अगर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, तो ये अपने लिस्ट से कहीं दूर चले जाएंगे, यानी टॉप 10 में दिखेंगे भी नहीं। यानी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि दिस इज द बिगेस्ट स्कोप। स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्कोप है कि आज एक शेयर अगर लिस्टिंग होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में 50 रुपए में लिस्ट हुआ और एक दिन में 250 रुपए अगर हो गया, तो आप सोच लो कि 500 टाइम्स या 400 टाइम्स कोई शेयर एक दिन में ग्रो होना, ये एक्चुअली नसीब की बात है। किसके पास रहना, किसको वो शेयर मिला है, या वो 250 रुपए पे रुका है, ये सारी नसीब की बात है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट 400% रिटर्न्स इन अ डे। ये मैंने अपनी आंखों से स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे देखा है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का हमारा ये जो सेशन है, ये फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबल लाइफ, इसमें मैं कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करने जा रहा हूँ टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पे अगर हम बात करेंगे, तो मुझे एक एक पॉइंट पे बात करने के लिए 2-2 घंटे का वक्त चाहिए। तो मैं, मेरे जो स्टूडेंट्स है या फैकल्टीज है, उनके लिए मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आपको कौन से चीजों की जरूरत पड़ सकती है,
वो समझने की आपको जरूरत है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी क्या है? इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हम शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते या अच्छी कंपनीज ढूंढ के उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते या शेयर्स में या nowadays derivatives contracts are very popular, but for that you need to gather more knowledge. ये एक बहुत आगे की स्टेप है, बट इनिशियली अगर आप बॉन्ड्स या शेयर्स में इंटरेस्ट ले रहे, इट मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये वर्ड्स आपने हमेशा सुने होंगे। और ये स्लाइड्स में स्पेशली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई फाइनेंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स है तो प्राइमरी शेयर मार्केट को समझना है। इट्स द एक वर्ड में, एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ, व्हेन योर फर्स्ट टाइम, when companies are issuing the shares or raising the money from a common public, it is a primary market. Very simple. यानी हम कोई आईपीओ ला रहे हैं या म्यूचुअल फंड में एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर, और हम लोगों को एक जरिया दे रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो और इन्वेस्टमेंट करो, राइट? यू आर गेटिंग द शेयर्स इन लाइव ऑफ दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर विच वी कॉल। तो पहली बार जब मार्केट में शेयर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी शेयर मार्केट। एंड सेकेंडरी, इट मीन्स कि जो शेयर्स हमने प्राइमरी मार्केट के थ्रू ऑलरेडी मार्केट में स्प्रेड किए हैं, इसमें अगर हमको ट्रेडिंग करना है, यानी वही जो एग्जिस्टिंग, जिसमें नए शेयर्स इशू नहीं होते, बट जो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके, और व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी मार्केट, देन लिस्टिंग की बात आती है। तो ऑल public limited companies need not be listed, but in order to list in any stock exchange in India, at least it should be public limited। मतलब public limited companies ही listed companies हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि सारी public limited companies listed हो। ये उनकी चॉइस है कि उनको लिस्टिंग करवाना है कि नहीं करवाना है। बट जो शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं एक्सचेंजेस पे या स्टॉक एक्सचेंजेस पे, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, तो ऐसे सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, जो आपने नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड या जियोजी, ये अलग अलग ये ब्रोकर्स है। इनके चैनल्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं जिनके आउटलेट्स हमारे सिटीज में अवेलेबल है, और हमको उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। विदाउट डीमैट means which is called as a dematerialized account, means you will get the shares in your electronic account, demat format only, right? You cannot get into physical format. Even you have to sell your physical shares which you are holding traditionally, right? So you have to first convert these physical shares into demat account. तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट, राइट? जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या जो ऑलरेडी शेयर्स है उस में ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible, sir. ओके। Yes, sir. और मेरा लेवल स्टूडेंट को समझने लायक है या और थोड़ा मैं स्टूडेंट के लिए? नहीं, बराबर है, बराबर है। You please go on. ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो फैकल्टीज आर विथ मी। Audible, sir. Okay, thank you, thank you. So now, after this investment, In fact, the participant can put their doubts in the chat box if they have any. yes, and let it be interactive session. Even in between, what is my opinion कि ये PPTs को, सारे स्लाइड्स को खत्म करने से अच्छा मैं बाद में तो बच्चों के साथ संवाद करूंगा ही करूंगा, और वो मेरा बेसिक मोटो है की संवाद साधला पाहिजे। मुलांच्या आणि माझ्यामध्ये एक संवाद असायला पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी आपण 15 मिनिटं दिलेले आहे। पण त्याच्या व्यतिरिक्तही कुठे तुम्हाला असं वाटतंय की मी थोडं फास्ट होत आहे किंवा तुम्हाला समजत नाहीये, तर विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे की दे मे इंटरप्ट मी इन बिटवीन फॉर अ शॉर्ट व्हाईल, सो दॅट I can understand your requirements. Okay. डॉक्टर सुनील सर, आय वुड लाईक टू ऍड अगेन वन थिंग की Okay. स्टुडंट्स किंवा पार्टिसिपंट्स जे असतील त्यांना आपण अलाउ करू की दे कॅन आस्क इन एनी लँग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, है ना? नाही, येस डेफिनेटली, मी तेच म्हणायचं, मला ते लँग्वेज शुड नॉट बी द बॅरियर, Okay, संवाद साधला पाहिजे, हा हा राईट?
So that communication is very important, and it should be a two-way communication. Okay. Anyway, Yes, now sir. when we are talking about investment, when we understand what is when we are focusing on stock market or primary share market or secondary market, specifically we are taking all of you towards secondary market, because I mean emphasizing you to purchase shares from the secondary market. At least don't purchase initially, but try to involve with the secondary share market, because nowadays it's a biggest opportunity. अभी आपने सुना होगा कि सेंसेक्स इज ऑन ऑलमोस्ट हाई, अपने एक हाई पे है. When I was the business associate with Motilal Oswal Securities Limited, that time 22,000 was the high ऑफ द स्टॉक मार्केट. और एक हम डिस्कशन करते थे कि आने वाले दिनों में कभी ना कभी सेंसेक्स 50,000 होगा. एंड आई कैन रिमेम्बर दैट डेज कि आफ्टर द स्पैन ऑफ 7-8 years now the sensex is touching the all time high, that is almost means sensex is above 47,000. That is unbelievable for me, right? और consistently देखो, when the entire world is facing the serious problem like corona or COVID-19. And in such a situation, our Sensex is reaching the sky high. Sky is the limit for the Sensex. Means consistently from the last month, I can see the market is going consistently high and high. Means I can see from 40,000 level consistently market is going to 47,000 एंड सेंसेक्स, सॉरी. एंड अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारे अच्छे शेयर्स ने, सेफ शेयर्स ने आपको ये महीने में 25% टक्का मैं बोल रहा हूँ, जहां पे हम 2%, 5%, 60% की बात कर रहे हैं एफडी में, वहां पे एक महीने में आपको 25% रिटर्न मिल रहे हैं. और रिस्क कहीं दिख ही नहीं रही मुझे, कंसिस्टेंटली सारे शेयर्स एक महीने में ऊपर जा रहे हैं. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, अब ये बात भी और है कि ये सारे शेयर्स आपको हमेशा ऐसे रिटर्न्स नहीं देंगे. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू सजेस्ट, ट्राई टू सी द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. और ये सब हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. What is it? Refers to a collection of investment tools such as stocks, mutual fund, bonds, cash, depending on investors' income, budget, convenient time. This is what portfolio management. यानी हमारे पास कौन से एसेट्स है. इट मे बी, हम हो सकता है कि हम जब डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है. हम कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, इंश्योरेंस की हमने कुछ हमारे रिस्क कवर करने के लिए, या कुछ हमारे पास शेयर मार्केट की भी पॉलिसी जिसको हम यूनिट लिंक पॉलिसीज बोलते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंश्योरेंस में. म्यूचुअल फंड्स हमने खरीदे हैं, या कुछ पैसा हमने रियल एस्टेट प्लॉट्स में, फ्लैट्स में लगाया है, कुछ फ्लैट खरीदा है. बट ये जो फ्लैट प्लॉट की हम बात करते हैं तो हमको एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है. तो हमको अगर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है तो इवन इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एट 500 रुपीज मंथली बाय इन्वेस्टिंग इन SIP ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो ये बहुत स्मार्ट अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है. तो ये जब अलग अलग ऑप्शन हम एक साथ क्लब करते हैं तो हम उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो. तो ये पोर्टफोलियो को हमको मैनेज करते आना चाहिए. वो पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हमारे पास नॉलेज की जरूरत है. और हम ये जब फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमको ये फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है. तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से एन अप्रोच. ये अप्रोच आपको डेवलप करते आना चाहिए. यू कैन बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो. Generally, these terminologies are used in mutual fund or fund managers or stock managers, right? They are maintaining the portfolios of their investors. But यहाँ पे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि आपके खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए. और जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ये सब डाइवर्सिटी, आपको जो पसंद है, जो आपने मार्केट से नॉलेज गेन किया है, आपने जो बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन किया है, वो नॉलेज के हिसाब से. बट प्रिंसिपल यू शुड नॉट फॉरगेट, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको हमेशा हर वक्त पैसा देगा जरूर नहीं. कभी शायद स्टॉक मार्केट का टाइम चल रहा है या म्यूचुअल फंड का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है जब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड
नीचे गए हुए हैं, तो आपको गोल्ड में प्राइसेस आप देखो, जनरली जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड में उतनी मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन इसके पहले जब स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, तो गोल्ड के दिन चल रहे थे। रियल एस्टेट तो एवरग्रीन सेक्टर है, बट रियल एस्टेट ऑलवेज इन्वॉल्व विथ लॉट ऑफ रिस्क एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क। तो ये रिस्क को समझना, रिस्क के प्रोफाइल को समझना, हमारे नीड्स को समझना, राइट, और वो हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे नीड के अकॉर्डिंगली रिस्क को जज करना, कि एक पेंशनर आदमी कितना रिस्क लेना चाहिए उसने, एक न्यूली एम्प्लॉयड जिसका अभी अभी जॉब लगा है और जिसके सामने अभी वो शादीशुदा नहीं है, उसके फैमिली नीड्स बहुत कम है, उसका सेविंग अमाउंट बहुत बड़ा है, तो वो हाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जा सकता है। तो ये अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स को स्टडी करना, उसको एक एज क्राइटेरिया हमारे रिक्वायरमेंट के साथ उसको मैच करना, ये है सारी चीजें जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, राइट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? सबसे पहले हमको रिस्क कम करना है हमारे पोर्टफोलियो की। और अब लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट पोर्टफोलियो, कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा, आप जैसे नए कुछ स्टूडेंट है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत कम है, या हमारी कुछ न्यूली ज्वाइन फैकल्टीज है, यंग एज फैकल्टीज है, अब उनका रियल एस्टेट वगैरह लक्ष्य दूर है, उनके पास अभी थोड़ा अमाउंट है, तो दे कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। इवन in a single sector like a stock market, you can create your portfolio by investing in a number of securities. You can go for bonds और in simply shares की बात कर रहे हैं, तो आप एक ही शेयर्स कैटेगरी में आप 4-5 प्रकार की स्क्रिप्ट ले सकते हो। वो हो गया शेयर्स का डाइवर्सिफिकेशन। और इसमें हम स्ट्रेटेजीज आगे पढ़ेंगे। और जैसे हम रिस्क को कम करना चाहते हैं, क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, और हम उसको खो देने के डर से हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और ये रिस्क जो है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्राइटेरिया और योर नीड्स। आपके पास कितना अमाउंट है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो। लेकिन फिर भी जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे रिस्क को कम करें और विदाउट अफेक्टिंग रिटर्न्स। इसको मैं लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन, जब हम इंश्योरेंस सेक्टर में शेयर्स इंश्योरेंस के बारे में या हमारे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, तब मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि जो ये अप्रोच है कि सारा नॉलेज गेन करने के बाद, नीड एंड इन्वेस्टमेंट या रिस्क रिटर्न एनालिसिस करने के बाद हम जो एक अप्रोच डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और वो अप्रोच हमको डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। इट विल रियली हेल्प अस टू टेक द रैशनल डिसीजन। देन portfolio management helps to select best investment portfolio by identifying the asset class that investor should invest in। यानी आपको कौन से एसेट में, whether you should go for real estate or mutual fund और इंश्योरेंस या डाइवर्सिफिकेशन उसका करना है, या अगर हम अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो मुझे रिलायंस में जाना है या टाटा के कुछ शेयर्स में जाना है, या कुछ जिनको मैं जानता नहीं, इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे कुछ शेयर्स है जो हाईली वोलेटाइल शेयर है, जिसको मैंने 40 एक और 70 का एक मैंने स्पैन देखा है कि उसका हमें कब वो 40 रुपए जाएगा और कब वो 70 रुपए जाएगा, ये हम बता नहीं सकते। शायद इसके लिए उसको 8-10 दिन का भी समय सफिशिएंट रहे, या कभी कभी एक साल भी हो सकता है। बट इसकी जो मूवमेंट्स है, इवन इफ मुझे इतना सिक्योर्ड नहीं लगता है अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं, लेकिन इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे शेयर ने, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, उसने बहुत सारे रिटर्न अपॉर्चुनिटीज दी। तो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स रिस्क एपेटाइट। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है ये दुनिया नहीं बताएगी, ये आपको डिफाइन करना है। जैसे कहीं ना कहीं मैंने राहुल महाजन का आपको एग्जांपल कोट किया, ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, इतना पैसा है शायद उसके पास, या होगा कि उसकी हम बोलते 7 पुश्ते बैठ के खाएगी। अरे 7 पुश्ते किसने देखी है? आज आपको अपने बारे में सोचना है। तो ये आपका क्या इनकम लेवल है, या आपके पास आप कौन से कंफर्ट जोन में हो सो फार एज इनकम इज कंसर्न, दैट विल डिसाइड योर रिस्क।
तो शायद ऐसे में जब आपके पास पैसे की ताकत होती है तो आप ज्यादा रिस्क लेते हो, और उस रिस्क की वजह से जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उतने गुना आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो ये उसने कितना रिस्क लेना है ये उसको खुद को सोचना है, दुनिया उसको नहीं बताएगी, राइट? बट उसके बारे में सोचना जरूरी है, और अगर हमने वो कैलकुलेशन किया तो हम हमारे एसेट क्लास को डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। देन कितना पोर्शन हमको डालना है, रिलायंस में कितना डालना है, इंडिया बुल रियल एस्टेट में, ये भी हम डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू। और उसके अलावा हम सोचते हैं कि एक पोर्शन हमने जो इन्वेस्ट किया है एसेट क्लास में, वो हमारा कितना रिटर्न हमको दे रहा है, या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या, ये बहुत जरूरी है, ये हमको देखना। अब आई विल स्किप सम स्लाइड्स। सी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, इसमें मार्केट इफिशियंसी का एक डायरेक्ट रोल है। अगर हमारे पास एक डेवलप सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, एंड इनफैक्ट वी आर हैविंग एनएससीज एंड बीएससीज, तो एक अच्छा डेवलप स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई सिक्योरिटी ट्रेड कर रही है तो वो सिक्योरिटी के रिटर्न्स को देख के हम रिटर्न और रिस्क के बीच में का एक जो ट्रेड ऑफ है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वेल डेवलप्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। यानी हमारे कोई अभी ये नए न्यूली फॉर्म एक्सचेंजेस नहीं है। 1990 से हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स हमारे पास हिस्ट्री है, हमने कई इसके उतार चढ़ाव देखे। तो कोई भी सिक्योरिटी में एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वजह से हमको एक ट्रेड ऑफ स्टडी करने मिलता है, राइट? अब ये अगर हम ट्रेड ऑफ को अगर समझे, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज को अगर हम समझे, राइट, तो हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हम अच्छे शेयर सिक्योरिटीज ढूंढे और उसमें इन्वेस्ट करें और उसके रिस्क रिटर्न को समझे। जैसे अगर हम हाईली रिस्क सिक्योरिटीज में जाएंगे तो हमको पैसा जरूर मिलेगा, बट देर इज अ फियर ऑफ लूजिंग योर मनी। मेरे पास ऐसे भी स्टॉक्स है कि रिलायंस जैसे शेयर में, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलायंस, बट अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें तो ही इज वेरी स्टेबल, बट अर्लीयरली बिफोर फ्यू इयर्स Anil Ambani and Mukesh Ambani both were very popular for as the share market is concerned, and everybody were keenly interested to invest in the companies of these great personalities. But अगर आज हम comparison करेंगे तो अनिल अंबानी के सारे shares is in a tremendous loss. तो देखो, एक रिस्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना 15-20 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आई हैव suffered a 90% loss in some shares of Anil Ambani's companies, right? तो ये एक अब उसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इतने कैलकुलेशन के बाद, इतने नॉलेज के बाद मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कि जब रिलायंस जैसे अनिल अंबानी की कोई कंपनी का शेयर अगर 200 रुपए से 20 रुपए पे आया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि कहीं ना कहीं इसको मैंने इनकैश करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी हाथ बार लगाएंगे और अनिल अंबानी जी की कंपनी को संभाल लेंगे। ये मेरी एक सोच निकली हुई थी स्टॉक मार्केट के अनुभव से, और मैंने वो जो 200 रुपए का शेयर, कभी जब 200 रुपए था तब नहीं लिया, लेकिन 20 रुपया होने के बाद वो शेयर खरीदा और एवरेजिंग भी किया उसमें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया प्रॉफिट के बारे में पहले बात करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क के बारे में, इसलिए मैं अपनी रिस्क शेयर करना चाहता हूँ। और आज जो शेयर है मार्केट में 2 रुपया, इट मीन्स आई हैव सफर्ड ऑलमोस्ट 90% लॉस इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस ग्रुप। तो ये है मार्केट के रिस्क। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आपको ये रिस्क असेसमेंट करते आना चाहिए, रिस्क एनालिसिस करते आना चाहिए, तब आप, और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये आज का खेल नहीं है, ये 1-2 दिन का ये नहीं है। आप अगर शेयर मार्केट में आज इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे तो आपको वो नॉलेज गेन करने के लिए 1-2 साल कम से कम लगेंगे। बहुत बार आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं रहेगा।
कुछ अच्छे भी एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो आपको उस अच्छे एक्सपीरियंसेस में बह नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास आज मैंने आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, अब मैं आपको मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई एम हैविंग अ टेक महिंद्रा इन माय स्टॉक। आज से 5 साल पहले मैंने 137 से टेक महिंद्रा लेना चालू किया है। आज का उसका भाव है 975 रुपए। अगर मैं अपने रिटर्न्स में देखता हूँ तो वो मेरे को 600% रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन ये 600% रिटर्न मुझे टेक महिंद्रा में मिल रहा है। आज से 5 साल पहले मैंने एशियन पेंट्स में 794 में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, आज उसका भाव 27 रुपए। तो ऑलमोस्ट 5 साल में मुझे ये 3.5 गुना 4 गुना रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन ये सब मैंने हासिल किए मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, जिसमें का मैंने अपना एक 90% लॉस का भी एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, और आज एक छाती ठोक के बताने लायक जो मेरे पास है, टेक महिंद्रा एंड एशियन पेंट्स। You can go to the stock market sites and you can check the share prices। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 2015 में मैंने एशियन पेंट 794 रुपए में लिया है, और एक भी शेयर अभी तक बेचा नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। एक्चुअली इट इज अगेंस्ट माय रूल्स, बट स्टिल कि ये टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स, इनके साथ मेरी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई है, और जो मूवमेंट में उनकी देख रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं कर रहा, हालांकि मैं दूसरे शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको आएगा एक्सपीरियंस से, और आपको ये अपनी खुद को ये सिक्योरिटीज आपको किताबी नॉलेज देगा, जैसे फाइनेंस के बेसिक्स क्या है। आपको कोई भी शेयर्स इन्वेस्ट करना है तो उसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखना चाहिए, ईपीएस देखना चाहिए, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारे फाइनेंशियल टर्म्स है। उस टेक्निकल टर्म्स में मैं अभी जाऊंगा नहीं, आपके फैकल्टीज है स्टूडेंट के लिए, आप उनको पूछिए एक अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चीजें देखना चाहिए। बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि रिलायंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी आपको एक दिन में 50% लॉस हो सकता है। ये मैंने जब 2007 का फॉल देखा, तब रिलायंस जैसे शेयर्स में मैंने उसको आधा होते हुए देखा है, ऑलमोस्ट 40% टूटते हुए देखा है, जब एक दिन में स्टॉक मार्केट टूट गया था, राइट, जिसको लोअर सर्किट लग गया था। यानी क्या होता है, आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। इफ यू आर परचेसिंग a share, it means you are indirectly becoming nothing but you are becoming a shareholder, you are the owner of that company। तो जब आप कोई बिजनेस में पैसा लगाते हो तो वो बिजनेस को ग्रो करने का अपना एक समय होता है। यू मस्ट डिवोट दैट पर्टिकुलर टाइम, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। If you are going to purchase a Reliance share, don't expect that particular company or Reliance will give you money within a span of 1 month, 2 months. This is the biggest mistake of your life if you are doing. If you are really investing in any particular share, it means you are investing in your own business. You are becoming a shareholder. So you must devote that particular time. And if you devote that 5 years, 10 years span, my dear friends, it's my promise to all of you, you will definitely earn a small return. Sorry, smart returns, not small, right? You will definitely earn smart returns. But आपको वैसे बिहेव करना पड़ेगा। when you are becoming a shareholder, you should behave like a owner of any business, and you should devote that time to grow that particular company। इन्वेस्ट ऐसे कंपनी में करो जिसमें आपको बिलीफ है। वो बिलीफ क्रिएट करने को आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक अपना एक उसको टाइम दो ग्रो होने के लिए, राइट। तो आपको जरूर रिटर्न्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अगर समझना है तो ये हमको बेसिक 6 स्टेप्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको you should learn the basic principles of finance, because every company is based on the basic principles of finance। जैसे अभी मैंने बोला, सिंपल चीजें, आपको बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझती है, आप उसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखो। शेयर्स में, शेयर मार्केट में डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अगर आप ये डिविडेंड एक अच्छा एवरेज डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो it is below your that particular company is giving dividend,
how many times or how oftenly that particular company is giving dividend. If any company every year giving the dividend, तो डिविडेंड कंपनी कब देगी? जब कंपनी उस पोजीशन में रहेगी. तो आप कितना डिविडेंड देख रही है ये मत देखिए, but consistently if that particular company every year is giving dividend, it means consistently that company is in profit and you are getting dividend. And if that dividend history is strong, it means that share is good. उसके अलावा जब आप शेयर प्राइस को देखते हो, बहुत बार हम देखते हैं कि हम मार्केटिंग में हमने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दे नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग. तो ऐसा आप मत करो. तो इसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि सिर्फ मार्केट प्राइस या मत देखो, उसकी फेस वैल्यू क्या है ये समझने की कोशिश करो. और जब आप ये फेस वैल्यू समझोगे तो डिविडेंड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा. तो कोई अगर शेयर 1 रुपया फेस वैल्यू है और उसका शेयर 200 रुपया है तो वो सस्ता है ऐसा नहीं है, क्योंकि 200 रुपया हमको एक कंफर्टेबल प्राइस लगती है. अगर वही शेयर प्राइस 1500 रुपये हो तो हमको महंगा लगता है. 15,000 लग रहा है तो वो भी महंगा लगता है एक शेयर की प्राइस. लेकिन बेसिकली अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और कोई दूसरा कंपैरिजन में 1 रुपया फेस वैल्यू है और उसका मार्केट प्राइस 200 रुपये है, तो मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए करने के लिए उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 2,000. तो ये 10 रुपए फेस वैल्यू और 1,500 रुपए मार्केट प्राइस वाला सस्ता हो गया. ये समझने को आपको टाइम लगेगा. मैंने एक एग्जांपल शेयर किया कि ये टाइम लगता है, इसलिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस को समझना जरूरी है. तब आपको फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है. मेरी भाषा में बुक वैल्यू की हम बात करेंगे तो कंपनी की औकात क्या है. फाइनेंशियल टर्म्स में आज अगर मैं वो कंपनी शेयर्स अगर कंपनी अगर वाइंड अप होती है उसको मैं बेचता हूँ तो पर शेयर मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, दैट इज व्हाट बुक वैल्यू. तो ये बुक वैल्यू जरूर देखना चाहिए. अब जरूरी नहीं है कि आप कम बुक अच्छी बुक वैल्यू है, मार्केट प्राइस कम है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न में, ये भी जरूरी नहीं है. दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ये समझने के लिए आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा. यानी सेकेंडरी मार्केट की हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स मार्केट में है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं. मतलब क्या है, जो सेकेंडरी मार्केट में स्क्रीन पे जो बायर सेलर्स है वो मार्केट में उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे. वो चाहे तो शेयर प्राइस को कहीं और लेके जाएंगे या नीचे भी पटक देंगे. दिस इज व्हाट वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये मार्केट प्राइस का खेल क्या है, ये बाइंग सेलिंग क्या होती है, ये हमको समझना पड़ेगा. उसके बाद हमको हमारे पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, I want to invest this much amount, but I will not directly invest all my 1 lakh rupees at a single particular time. I have to divide my amount into 5 installments. Let us say 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 and 20,000. तो मैं एक प्रॉपर एवरेजिंग कर पाऊंगा, और एवरेजिंग हमेशा नीचे नहीं, मैं ऊपर भी करूंगा. ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमको सेट करना है. एक मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो अगेन 100% 200% में जाने से अच्छा हमने प्रैक्टिकल सोचना चाहिए कि इसके लिए आप हमेशा बेंचमार्क रखो. सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो बैंक एफडी आपको कितना देगी, 6%. तो यू शुड बी हैप्पी विद द 8% एनुअल रिटर्न्स आल्सो. ये आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तब आपको अच्छे या बुरे रिटर्न्स के बारे में समझ में आएगा. रिस्क रिटर्न एनालिसिस आपको समझ, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ऐसे आपको खुद के ऑब्जेक्टिव सेट करना है. देन उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है. ये एक्चुअली आगे के सारे स्लाइड्स में है, लेकिन अपने पास समय कम है इसलिए मैं यही पे मैक्सिमम चीजें आपको एक्सप्लेन करना की कोशिश कर रहा हूँ. स्ट्रेटेजी बनाना है मुझे. तो मेरी Dr. Atul sir, can Dr. Sunil keep on going? Do we have time for him? Yes, you can proceed for 5 minutes again. I will require at least 10 minutes, sir. Okay, you can take. You can. Okay, sir, you can continue. Okay, thank you so much. Go. हमारा एक इन्वेस्टमेंट, Yes, sir, go ahead, please. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी क्या, मुझे डिसाइड करना है. मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर आपने लेटेस्ट से यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव्स फॉर 10%, बट योर स्ट्रेटेजी शुड बी कि whenever
I am setting my objective 10% annually. But sometimes this stock market may give you returns after 1 month also. आप देखो, एक महीना क्या, अगर आपने शेयर लिया, हो सकता है उसी दिन 10% बढ़ गया। तो मेरे पास ये स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि मेरा 10% मुझे मिल गया, तो कल 10% बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा। मैंने आज 10% बढ़ाया तो 15 दिन में 150% हो जाएगा, या एटलीस्ट साल भरे में। ये सब फालतू की बातें। You should be clear about your objectives, and if you are getting 10% in a single day, what I will suggest, immediately sell that stock. This is what my strategy. अब और स्ट्रेटेजी की बात करूं, मैं आपको बताता हूँ। आप इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, 1 लाख में एट ए टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी हो गई। क्योंकि आज मैंने 1500 रुपए में रिलायंस का कोई शेयर खरीदा है, तो शायद हो सकता है कि मुझे 5 साल तक रुकना है, आने वाले अगले साल तक शेयर मार्केट के दिन अच्छे नहीं रहेंगे, तो हो सकता है वो 1500 का शेयर 1000 रुपए तक जाएगा। तो 1000 रुपए एकदम तो नहीं जाएगा, तो आई मस्ट सेट सम एटलीस्ट standard objectives. Let us say कि if this particular share goes below 10%, again I will purchase my second installment. I will put my second installment in stock market. ये मेरी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और ऐसा करते करते शायद मैं 1000 होते तक हर नीचे के लेवल पे, मैंने 1400 में, 1300 में, 1200, 1100, 1000 हर लेवल पे मैंने खरीदा, और कहीं ना कहीं वो स्टॉक 1000 भी गया। लेकिन जब मेरा एवरेज प्राइस 1200, 1250 होगा, तो मुझे 1500 तक राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो 1250 से मेरा जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं एक स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं आगे चल के, कि अगर मेरा 1500 में शेयर लेने के बाद मुझे 100 शेयर मैंने खरीदे, तो मुझे रिटर्न्स मिल रहे अगले महीने में, अगर 1700 रुपए या 1500 रुपए से 1550 हो गया, 1600 हो गया, तो मेरा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मेरे पास 100 शेयर है, तो मैं अभी 25 शेयर 1600 पे बेच देता हूँ, 75 में मैं रुका हूँ, फिर और 25 शेयर 1700 में बेच देता हूँ, और 25 शेयर 1800 में बेच देता हूँ, और 25 शेयर में जिंदगी भर नहीं बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल। यानी यू शुड बी स्ट्रिक्ट विथ योर स्ट्रेटेजीज, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्ट्रेटेजीज, तब आपको शेयर मार्केट में पैसा मिलेगा। यू शुड हैव अ गेम प्लान फॉर योर पोर्टफोलियो रिवीजन। बहुत बार आप पोर्टफोलियो बनाते समय गलतियां करते हो। शायद आपने, जैसे मैंने रिलायंस का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत है। टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को आपको ट्रैक करने की जरूरत है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो शेयर मैंने 2 महीने पहले अच्छा समझ के लिया, लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये शेयर्स खराब होते जा रहा है, इसके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, तो आई मे क्विट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी और स्क्रिप्ट इवन आफ्टर बुकिंग अ 25% लॉस ऑल्सो, जो अभी रिसेंटली मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ किया। अभी तो वो प्रॉफिट में है, लेकिन मेरा जो हिस्ट्री है, जो मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैंने 700 रुपए से भी वो शेयर को खरीदा, 300 रुपए तक एवरेजिंग किया, लेकिन ये 47,000 जब सेंसेक्स हो रहा है, तब अगर उस शेयर में अगर मूवमेंट नहीं आ रही तो कब आएगी? तो मैंने उसको, एवरेज मेरा जो प्राइस है 350 है, तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स 360 रुपए में, 366 में मैंने कल मेरे सारे LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर बेच डाले, जिसको मैं 5 साल से पाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ, और इवन एक एक्चुअली अगर वो मेरा लॉस में भी होता तो मैं बुक कर देता था, और आई विल क्विट फॉर अनदर शेयर सिक्योरिटी। दिस शुड बी माय गेम प्लान। तो ऐसे गेम प्लान्स मुझे एक्सपीरियंस सिखाएगा, ये मेरे इसमें होने चाहिए। उसके बाद मेरे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या थे, मेरा पोर्टफोलियो उस हिसाब से चल रहा है क्या, इसको मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाने पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस देके। तो अब ये इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे आप देखो कि फ्यूचर मार्केट है, डेरिवेटिव्स, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। तो इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आज मेरे पास 2 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 लाख के शेयर्स मैंने खरीदे, और इफ आई एम बियरिश इन द कमिंग डेज, अभी 47,000 सेंसेक्स है, हो सकता है इसमें करेक्शन आए, और आना ही चाहिए। एक हेल्दी सेंसेक्स के लिए करेक्शन बहुत जरूरी है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है।
जितना ऊपर आप कोई भी चीज उछालोगे उतने तेजी से वो नीचे आएगा। मार्केट को बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। ये 47,000 का सेंसेक्स 40,000 आने को टाइम नहीं लगेगा। शायद ये 7,000 सेंसेक्स बढ़ने के लिए साल लग गया होगा, लेकिन वो नीचे आने के लिए शायद 1 महीना सफिशिएंट हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जब आपका बेचने का मन नहीं कर रहा है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक, तो आप इंश्योर कर सकते हो उसको। कैसे इंश्योरेंस करोगे? आप फ्यूचर ऑप्शंस है, उसमें आप कोई फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी है। निफ्टी क्या है? इट्स इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज। बीएससी का कोई इंडेक्स है 30। तो ये इंडेक्स ऑलमोस्ट इज द मिरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको आप बेंचमार्क बनाओ, उसके फ्यूचर को बेच दिया आपने, मतलब क्या? कल को अगर मार्केट गिर भी गया तो उतना आपको फ्यूचर में जितना सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ है, सेल करोगे, शॉर्ट करोगे फ्यूचर को, तो जितना नीचे आएगा सेंसेक्स या निफ्टी, तो आपको पैसा मिलेगा। और इधर जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है, ये आपको ये जो जो दूसरा फ्यूचर का जो शॉर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट मिला है, दिस इज कॉल्ड एज ए इंश्योरिंग। यानी आप क्या कर रहे हो? हेज कर रहे हो उसको। तो ये ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल है, वो आपने करना चाहिए। दैट इज व्हाट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। और वो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस देके आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, अभी बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसको हम 4 बेसिक इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 है कि हमको बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेरी ये है कि मैं ए ग्रुप के अलावा कोई शेयर ही नहीं खरीदूंगा, फिर कितना भी कोई मुझे बताए बी ग्रुप का कोई शेयर कितना भी रिटर्न क्यों ना दे रहा हो, लेकिन आई विल परचेस ओनली ए ग्रुप शेयर। दिस इज द बेस्ट थिंग, और दिस में बी अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगर आपको रिस्क से बचना है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमको सेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमको हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या खरीदना है, कहाँ कहाँ जाना है, कितने पोर्शन में जाना है, कितना अमाउंट रियल एस्टेट में, या कोई पर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो कौन से शेयर्स में कितना, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने अभी तक देखा, और फाइनली पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। तो ये 4 चीजें, ये जो बेसिक अप्रोच हमको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट होरिजन के लिए, राइट, तब आप एक स्मार्ट रिटर्न्स कमा पाओगे, राइट। अब ये यही चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। कुछ चीजें जैसे यहाँ मैंने ईगो की एक चीज डाली है। ईगो यानी हमेशा शेयर मार्केट, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप शेयर मार्केट में थोड़े कुछ अचीवमेंट्स आपको मिल जाते हो तो आप हवा में उड़ने लगते हो। मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत कम सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद उस स्टूडेंट शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बाद मुझे सिखाने लगते हैं। तो इट्स ओके, दैट सेम थिंग वाज विथ मी। तो ये ईगो इज वेरी डेंजरस। ऑलवेज पीपल टॉक अबाउट द प्रॉफिट, बट दे डोंट टॉक अबाउट देयर लॉसेस। तो जब उनका प्रॉफिट होता है तो सारी दुनिया को चिल्ला के बताते हैं। तो ये ईगो को हमको बाजू में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, राइट, तब हम प्रॉपरली हम उसको मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो ये जो बेसिक 4, अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। जो आगे के स्लाइड्स है मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। आई होप सो कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे, right? And with this, I will end my today's topic. Thank you very much. Thank you, Tekade sir, for providing me this wonderful opportunity. Thank you, Mukul sir, for providing me this opportunity. And finally, other guests also, I'm thankful for your keenful attention. My dear friends, finally, I hope so. I have tried my level best, because stock market is not an easy topic for new learners. But I hope so at least you gain something from my today's topic. And for details, you are free to contact me through Mukul sir. You can contact me. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful talk. And thank you for covering your session in the stipulated time, which was allotted to you, since we are on the last day, fag end of our workshop, FDP. So today there is a time limit for everything, because we have added one more session.
In fact, every day the session were kept only for 1 hour, followed by question answer. But you have covered everything, sir, very nicely. In fact, I am into stock market. I followed whatever you said. Even I think the beginner must have followed everything, because you have explained everything in a very easy and simple language for the beginners. So thank you so much. Thank you for coming and sharing your thoughts and expertise and experience. I wish all the participants have followed, and let us open the session, 5-minute session for question and answer, if somebody is having it. Otherwise, you can post your queries on our email address. In turn, I'll be talking, I'll forwarding it to Dr. Sunil Ikharkar, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Sunil Ikharkar, sir. Here we have one question in our chat box. That is from Professor Rashmi Uike. She asked us, which is the best mode to select in mutual funds, monthly, half yearly, or annually? I will say the best mode is for a new learner. I don't know Rashmi ma'am from how long she is investing in mutual funds. So let me first know about that. Rashmi ma'am, from how long you are investing in mutual funds? Madam, can you please unmute yourself and you can directly talk if you are on this platform, because few of the participants, they are on YouTube platform as well. Ma'am, are you there, Rashmi ma'am? Yes, sir. Actually, I am a new learner, so. Okay. Yeah, So you are new learner. Okay, thank you so much. If you are new learner in a mutual fund, then at this particular crucial stage of 47,000 Sensex, you are asking me this question. So I won't suggest to go for a single time investment. Actually, any time the best investment is SIP. That is called as a systematic investment plan. Why it is called systematic investment? Because you can choose. It need not be every month. It is called as a SIP, but you can go quarterly also. So that may be called as a SIP. अगर आप हर 3 महीने में invest कर रहे हो, but what is needed कि there should be a systematic investment. After every 3 months, you are going for investment. Let us take an example. You are investing 25,000. So in an year, you are investing 1 lakh. After 1 quarter, you are investing 25,000. So in this particular case, you need not bother about the movement of a stock market, because mutual fund is much more different, because it depends on which fund you are selecting. If you are going for a growth fund, so almost 60% or 70% amount is invested in stock market, and remaining 30% or 40% will be in debt market or secured market. तो आप जब ग्रोथ में जा रहे हैं, तब आप टोटली ऑलमोस्ट यू आर डिपेंड ऑन शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट का मूवमेंट्स को आपको ट्रैक करते रहने की जरूरत नहीं. मार्केट कहीं भी जाएगा, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो इट मे बी मंथली और इट मे बी क्वार्टरली, बट ये स्मार्ट वे है. इससे फायदा ये होगा कि आज सेंसेक्स 47,000 है, तो आप यहाँ पे 25,000 डालोगे. कल को अगर 3 महीने बाद अगर सेंसेक्स 45,000 है, वहां पे भी आप पैसा डालोगे. फिर उसके बाद अगर वो 40,000 जाए या 35,000 जाए, यू नीड नॉट टू बॉदर. आप हर लेवल पे बाय कर रहे हो और एक एवरेज बाइंग प्राइस आप क्रिएट कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल कोई फंड में अगर 30 रुपए आज एनएवी है, तो आपका एवरेज इस पीरियड में 20 रुपया ना जाते हुए कहीं ना कहीं 25 रुपया आएगा. इवन इफ एनएवी इज 20 रुपया भी गई होंगी वो 30 के बाद, लेकिन आप कहीं ना कहीं 24 में रहोगे. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शेयर किया था, यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वैल्यू एवरेजिंग. और उसके बाद जब मार्केट कभी ना कभी रिकवर होगा, तो यू विल जनरेट अ स्मार्ट रिटर्न्स. So that's why for new learners, I will almost suggest SIP mode. You should go for systematic investment plan, and you can have the same funda in stock market also. यही प्रिंसिपल से आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, provided that initially you should invest in A group securities only, blue chip companies only. Next query. Is there any other query? No, sir. No query is here. Dr. Mukul, sir? Yes, sir. In fact, I will again would like to thank Dr. Sunil, sir. And one more instruction to all the participants.
See, today we are going to take this as a valedictory function. The last session we have invited Dr. Madhvi Kulkarni Madam from SNDT University, Women's University Pune. She is vice principal over there in Arts and Commerce College. But before we proceed with her session, one small instruction I'd like to give you is all of you are supposed to fill the feedback form. If you want the e-certificate of participation, you have to fill the feedback form and answer the MCQ question, because through which we will come to know whether you have followed all the session or not. So passing or failing is not an issue. All of you are supposed to give the feedback to the organizers, including the MCQ question, and you have to subscribe to the YouTube channel also, on which we are streaming the live session right now. So this two things will need for issuing you the certificate of successful participation. Hopefully that will come to you before on or before 1st of January 2021, because we'll need some time to tabulate those who have answered, those who have given the feedback. After that only we'll be issuing the certificates to all the participants for their successful participation. I hope all of you have enjoyed all this session. Now we are moving towards our final and fag end of the FDP, and today's session is very interesting from the point of view of education, because Dr. Madhavi Kulkarni, she is going to talk on new education policy 2020, which was just drafted few days back. And we all as a people related to or undergoing education or imparting education, we all should be well versed and very much familiar with the new education policy which was drafted by the Narendra Modi government. Over to you, Dr. Atul sir. We can start with our teaser again, followed by introduction of Dr. Madhvi Kulkarni Madam, followed by her session. And again, at the end, we'll be having question and answer session. Let us take it as our validatory function, right? Over to you, Atul sir. Hello. Hello. Sir, Hello. am I audible? Sir, am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are Playing our teaser, sir. Huh? Okay. Thank you so much, Sunil sir, once again. Thank you, Mukul sir. Thank you, everybody. Thanks a lot, sir. Sunil sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Thank you. Hello. 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 So you can play the introduction now. Okay, sir. Okay. Yeah. Did Madam join the session? I'm just asking. Yes, sir. Yeah, I think she's there. Yeah. Welcome, Madam, to the last day of the FDP. Yeah. Welcome, ma'am, and good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome, ma'am, and thank you so much for joining. My pleasure. The resource person for today's activity. Dr. Madhvi Kulkarni is a vice principal and associate professor of Commerce SNDT Arts and Commerce College for Women, Pune. She has total experience of 23 years. The research specialization is in HR. HR experience as a statistical consultant with more than 10 years in corporate as well as government sector. The clientele profile includes Excite India, Sriram Foundries Limited, Forbes, Marshall Limited, Yashada, Top Gear Transmissions Limited. About the research papers and books author.
She has authored 4 books and 26 research papers, which are presented in national as well as international conferences in UK, Thailand, Nepal, and India. The research projects as a NEP include empowerment of women by Women Ensures in Maharashtra University Grants Commission from July 2011 to July 2013. About minor projects, it includes a study of empowerment status of urban women in Pune city, which is published in International Journal of Research in Commerce, Economics and Management. A study of financial empowerment status of urban women in Pune city, which is published in the International Research Journal of Social Sciences and Humanities. Study of financial literacy of the students, interdisciplinary project, and changing mentality behind the sex ratio, interdisciplinary project. About the membership of academic bodies, subject expert selection and CAS committees in SNTU and SNTU Women's University. A member of bodies of studies, commerce and economics and statistics, SNTU Women's University for 6 months. Member of board of studies, commerce. Member of LICs and vigilance squad. For academic consultancy include survey, evaluation of impact of reading class program of doorstep NGO Association ASM France, survey of greenkeepers of the Central Tea Research and Training Institute Pune, Asian Development Bank and CER survey of empowerment of participants in SHGs of Sangona Mata Balak Utkarsh Pratishthan Sandhya. Software development for floral calendar and mapping project central and research and training institution. Pune. I hope you will enjoy this session. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Welcome, Dr. Madhavi Kulkarni, ma'am, and would like to request her to please proceed for her session. Dr. Madhavi Kulkarni, madam. Thank you very much, sir. First of all, let me take this opportunity of expressing my sincere thanks to the organizers and to Dr. Atul, Principal Sir, for giving me this opportunity to talk about a very sensitive and very heart-touching topic for me and to SNDT Women's University National Education Policy 2020. I know that the participants here may not be very much interested in knowing something about national education policy because of 2 reasons. Maybe they are researchers and they are going to on the verge of completing their academics. And there will be teachers who are already here who have set themselves in the process of this educational system. But considering the fact that the next generation and generations to come after this are going to be affected much because of this national education policy positively, and it is definitely going to give us India a different type of age over others in the world. Let me start my presentation. I'm proud to present before you the presentation of national education policy because of 2 reasons. One reason is that I do belong to SNDT Parivar, where our former Vice Chancellor, Professor Dr. Vasudha Kamath, was the member of this National Education Commission, which was established for formulating this policy. So we were in touch with whatever is happening at governmental level, and now the policy is being implemented from the year 2021-22. Am I audible clearly? Kalyani, Miss Kalyani, Kalyani, am I audible? Am I audible? फोन करतो. Okay, I'll share my screen now and I will start my presentation.
The presentation will last for 30 to 35 minutes, not more than that. That is the time which is given to me. And I will try to complete the presentation in that time. And after that, we will have... Can you please unmute everybody? Few participants, they have... Yeah. Sorry, can you mute? Thank you, sir. Okay. Let me start my presentation now. I've taken the view that I'm going to explain National Education Policy 2020 with a bird's eye view, because it is not possible to complete everything in a time span of 30 minutes, with a reference to higher education, because we all belong to higher education. The presentation will cover introduction, highlights and focus of National Education Policy 2020, then principles of the policy, salient features of the policy, vision, what is the vision of this policy, then what will be the structural changes that are going to take place at school level. It will be only introduction of that. Then what is the timeline of implementation of this National Education Policy? And then I'm going to cover a little bit of higher education and what impact will this National Education Policy have on higher education system of India. And then what the students, teachers and technology are going to gain because of this, and how is the technology being used and will be deployed in the new National Education Policy implementation. What are the problems in present higher education structure? Because see, why is there a need of any new policy? When we have policy in place, there are certain reasons why this is to be done. The very first reason is that the higher education system of today in India is very fragmented. May it be medical college, may it be engineering, may it be management faculty, may it be conventional courses like BCom, BCA, BBA. We find that it is fragmented. There is no uniformity and there is no integrity in the higher educational system of India. There is less emphasis given on cognitive skills and learning outcomes. What are we doing? We are just making it sure that every year batch of students will go out with a paper of certification without any learning outcome measured, because we are not interested in knowing what exactly is the use of that paper which is given to the student. There is rigidity for sure. There is rigidity as far as the disciplines are concerned, as far as the degrees are concerned, as far as specializations are concerned. There is very limited access to socially and economically disadvantaged areas of India to have access to higher education system. Because the higher education system is much dependent on English or Hindi as a language. And if it is to go to the remote areas and socially and economically disadvantaged areas, it should be in local languages. This is not happening today. There is limited teacher and institutional autonomy. I'm going to talk about this afterwards. There is inadequate mechanism for merit-based career management. Lesser emphasis is given on research. There is no emphasis on research. Always the emphasis is on examination and the outcome of the examination being degrees awarded. Large affiliating universities are there. Every university has many hundreds of affiliating colleges, and because of this what happens is there is no standard of undergraduate education, because universities find it really difficult to control the quality and to monitor the quality of undergraduate education in India. Okay. We are talking about the National Education Policy. Are we doing it for the first time? No. Since our independence, there are many efforts done. But then what has happened is the efforts were in the different phases, and that too concentrating on a particular sector of the educational system. First, we started with university education in 1948-49. Then again in 1952-53, it was secondary education that was taken into consideration. Then again, for the first time in the year 1964 till 1966, Kothari Commission
is the commission which tried to give the shape to national education policy to consider all levels of education system in India. And the policy was published in 1968, first national education policy of India. Then there were amendments that took place to this national policy in the year 1976 for making it constitutional amendment. Then in 1986, it was again changed. In 1976, the structure of higher education and school education was changed from 11 plus higher education, 11 standard and then higher education, to 10 plus 2 and then higher education. In 1992, again, there was modification done in the higher education policy. Then there was one more committee established in the year 2016, which published a report and asked for the complete revamp and re-engineering of the complete Indian education system. And on the basis of that, a committee was formed under the chairmanship of Dr. K. Kasturi Rangan. And this committee is the brain of National Education Policy 2020. And as I have told you already that our former Vice Principal, Dr. Vasudha Kamath, was one of the nominee member of this committee. This committee did a full-fledged job of re-engineering the full education system of India. It had many consultations done. It started in 2015. Online consultation was started on the portal of government, www.mygovernment.in. Then nearly 2.5 lakh gram panchayats and 6,600 blocks and 676 districts were consulted during the period of May to October 2015. Both the efforts, online and offline consultations, were completely done for framing this policy in the year 2015. Then the draft of this national education policy was published in 22 languages and audiobooks in the year 2019. And then it was also discussed with MPs, Member of Parliaments of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, then Telangana, and all other states as well. Then there were special meetings held of cabinet in the month of September 2019, and then Parliament passed the National Education Policy 2020 very recently in the year 2020. Now, with this background, what are the highlights of this National Education Policy? This has made, National Education Policy has made it very clear that we have to have a very uniform higher education system. And that is why all higher education institutions, except for legal and medical colleges, now will be governed by single regulator. Up till now, there were many regulators like UGC, then AICTE, then National NCERT, and then there were many others for professional courses as well. Now, all of them will be brought under single regulator, and that will be governed at a national level. There will be common norms to be in place for private as well as for public higher education institutions. No separation of norms. It will be common norms applicable to both private as well as public. MPhil program is completely discontinued. Now there will be no MPhil program anywhere in India. Board examinations will be based more on knowledge application than only of recollection of knowledge. It will be focused more on application. There is one more highlight that till class 5, there will be medium of instruction will be completely either a mother tongue or a regional language. There will be common entrance examinations for all admissions to universities and higher education institutions. School curriculum will be reduced only to core concepts. There will be reduction in school curriculum, but from 6th standard onwards, there will be integration of vocational education in the school education. The focus of this policy is only on these three aspects.
Very important three aspects are, first is there will be always multidisciplinary education. May it be school education, may it be higher education, it will be multidisciplinary. It will be more equitable and it will be including every student, may it be from rural area, may it be from urban area. So it will be equitable and all inclusive. And then third factor, very important factor, there will be academic, administrative, and financial autonomy given to every educational institution on the basis of accreditation and on the basis of the grade which the institution possesses. Higher the grade, higher will be autonomy in all these three aspects: academic, administrative, and financial. There are principles, 8 principles of this policy. Let me summarize them in one or two sentences. There is respect to diversity, it aims at equity and inclusion. It always insists on community participation, use of technology much focused. There should be use of technology enhanced on a very large scale. Emphasis is given on conceptual understanding and not on rote learning for getting marks. There is emphasis given on recognizing the unique capabilities of each and every student. It focuses on giving importance to critical thinking and creativity so that decision making and innovations will be boosted. It also emphasizes the need of continuous review of this education policy for making it more effective. These are 8 principles on the basis of which this policy will be implemented. Now, salient features of this policy. Once we start implementing this policy from 21-22, we are going to drop the structure of 10+2. There will be no structure of 10+2 now. It will be, for schooling, it will be 5+3+3+4. What is this? These first five are foundation years in which all KG and first and second standards are included. Then what is this three? Third standard, fourth standard, fifth standard. Then what is third level? Sixth standard, seventh standard, and eighth standard. And what is fourth level, that is called as higher secondary level, is 9th, 10th, 11th, and 12th. This is schooling structure. So now higher education, coming to higher education, it will be either of 3 years or 4 years. I'm going to explain this again when I come to higher education. PG level will be again either one year or 2 years depending on undergraduate level degree. Graduation will have both major and minor courses. It will not only be restricted to major courses as it is done today. Only commerce, only science, only. It will not be the case. It will have the combination of both major and minor courses. There will be one authority governing full higher education system of India. There will be uniformity in grading and rules to all universities. Everything will be uniform. Now today what happens if I am SNDT teacher, I will have different rules, I will have different curriculum, I will have different eligibilities, and if I go to Mumbai University or Nagpur University, it will be altogether different. No, this is not possible in new higher education policy. Now it will be uniform grading as well as rules to all universities. Then there will be, as I have told you already, there will be autonomy to all colleges as well, not only to universities, but all colleges as well, based on the rating, based on my accreditation and my grade, which I'm going to get from independent agency. There will be multiple entries and exit for any program to every student. This is very important. I'm going to explain it afterwards. For this multiple entries and exit, what do we require? We require a credit system to be followed at every year at graduation level, because those credits will be accumulated by the student,
And then student may decide to go out of this structure for 1 year or 2 years, and then again the student can join with those credits and will continue accumulating credits for the full graduation or post-graduation course. So this multiple entry and exit requires credit system. And then there will be higher education in 3 stages. First stage will be certification stage, second will be diploma, and then there will be degree given to the student after getting those many credits at different levels. Okay. This education policy has a tagline. What is that tagline? The tagline is that it wants every student to be pride that he or she is Indian, and in addition to that, the education system aims at making that particular student a truly global citizen who will be able to compete with any student of any other country. So this is the tagline of National Education Policy. So for doing that, what is required are 3 aspects. Student must get knowledge, skills, and values inculcated in the student for making his or her education more sustainable, and it should result in global well-being. So this is what our national education policy is meant for. I already given the explanation of this point to you. The schooling is of 4 stages now: foundation stage, then preparatory stage, then middle stage, and secondary stage, and higher secondary stage. I've already explained it to you. Now, this is very important, the timeline of implementation of national education policy. Considering the fact that all of us are going to be in this education system only for a few years or maybe for more years, but this policy implementation will start in 21-22, and the complete implementation of that will get over in the year 2040, because it requires complete re-engineering of the education system in India. So we just cannot see the benefits and fruits of this policy till the year 2040, because it is requiring structural changes at governmental level, at national level, at state level, at university level, at college level. And so the policy will be fully operational only in the year 2040. And after that, there will be a comprehensive review and feedback of this system done. So the national education policy requires these many years and stages for implementation to be done. Okay, now I'm going to focus more on higher education policy, higher education, because I belong to higher education, and you all who are here audience are all belonging to higher education. The aim of this national education policy, as far as the higher education is concerned, is that by the year 2035, it aims at having 50% of the student population enrolled for higher education. 50% of the student population. It is talking about student population, not the full population of India. To 50%. Then what is today? I'm going to cover that in the next slide to come. Now see, what is happening in India today is our gross enrollment ratio is as low as 26.3%. Now, we are to aim at increasing that to 50% by the year 2035. Is it possible? There are hindrances in today's structure, and that is what national education policy is going to remove. Let me give you the example. It is completely fragmented and watertight system in India. Now it is governed by many agencies. I already told you that UGC, AICT, NCT, then Council of Architecture, then NCVET for vocational education. So I have taken a few examples here. There are many such agencies which govern different educational structures in India. Coming to only UGC, we find that UGC governs 911 universities. They are fragmented in central, public, private, deemed universities. And when it comes to universities governing colleges and UGC governing colleges through universities, the number is 41,935.
and they are again fragmented in different sectors. I have taken only one classification, that is affiliated colleges, constituent colleges, and autonomous colleges. So because of this watertight structure, every student is not able to be accommodated, because we find that these colleges and universities are now concentrated in more in urban areas, and there is a dearth of colleges in rural areas. And then the gross enrollment ratio cannot be increased because the number of colleges in urban areas is more and number of colleges in rural areas is less. Now, if this is to be taken care of, what is suggested is this: the full structure will have only one bifurcation, that is universities with constituent colleges, as we are in SNDT. We are SNDT University with 5 constituent colleges. One of that is my college, and they will be either in teaching as intensive teaching, or maybe research as intensive. It will be complete bifurcation right from the first year. Either you will have to focus on teaching or you will have to focus on research. But that can be done by the universities along with the constituent colleges or by autonomous colleges. These autonomous colleges will also have to decide whether they are teaching oriented or whether they are research oriented. These will be only 2 classifications. There will be nothing else. This is what the structure is in national education policy. Okay, who will govern all these things? As I already told you that only one commission, Higher Education Commission of India, will govern the full higher education system of India, and all UGC, AICT, and everybody will be clubbed in these 4 pillars of higher education system. So Higher Education Commission will have 4 pillars. Those 4 pillars are National Higher Education Regulatory Council. This will take care of the administration of higher education system. It will regulate the higher education system. Then there will be National Accreditation Council. This council will accreditate every national education, every institution, may it be university or may it be college, for giving the grades. This accreditation council will decide my status about autonomy. It means institution status about autonomy, whether it is academic, whether it is financial, or whether it is administrative. Higher the grade, all the autonomies will be given. And autonomous colleges will run their own structure. So, Council of Accreditation. Then there will be Higher Education Grant Council. This council will give the funding from the government to the universities and to the colleges. May it be private college, may it be public college. Every college, every university will have equal chance of getting grants through this particular agency. Now, coming to the 4th pillar, it is General Education Council. This will look after the educational system of higher education system of India. Now, what are the highlights of higher education system after this national education policy gets implemented? Many points are already covered. I will just make this is summary of highlights of higher education system. It will be multidisciplinary education. There will be no arts, science, commerce, there will be no bifurcation whatsoever. There will be multidisciplinary education. Faculty, it means the teachers as well as the colleges and universities will have autonomy of implementation, of decision making, of curriculum. More autonomy will be given to teachers as well as to institutions. There will be flexible curricular structure. Every institution will decide the curricular structure for its own needs and for the needs of the customers or the students who are going to be accommodated in that institution. There will be multiple entry and exit points. I already told this to you. Either the program will be, degree program will be of 3 years. If it is of 3 years, it will be teaching oriented, and if it is of 4 years, it will be research oriented. Degree with research will require 4 years, and teaching
intensive will require 3 years. Every student will accommodate the credits in the academic bank of credit, and they will be available with him or her for until the degree is awarded, until the further education is pursued by the student. For master's level, it will be either 1 year or 2 year. If student has completed 4 years with research program, then master's level will be for 1 year. And if student has done 3 years, then it will be of 2 years to complete master's program. PhD will have master's or 4 years bachelor's degree. Immediately after the student completes 4 years with research, PhD will be pursued, will be possible to be pursued by that student. Otherwise, it will be 5 year, 3 plus 2, and then PhD. This will be the structure for PhD courses, and that is what is said. Universities will have integrated 5-year bachelor and master's program. University is running masters, every educational institution for that matter will have integrated 5-year program, including bachelor's and master's. Then there are other features for structure is concerned. All higher education institutions will have multidisciplinary. May it be a college or may it be a university, it will be multidisciplinary. And every institution, may it be college or university, will have minimum 3,000 students, minimum 3,000 students. So the colleges and universities with less than that number will be required to be merged, and number is required to be 3,000 to make it viable commercially, financially. One multidisciplinary institution per district. Every district in India will have one such multidisciplinary institution, either a college or the university. Then universities will be offering multidisciplinary UG/PG programs that I already told you. Accredited higher education institutions will have option to run. This is very important. Now what is happening is, if I am a college, I will only focus on the physical degree college education in the college. Now it will not be so. Every higher education institution will have all these things. What are these 3 things? Physical learning in the college. They will have distance learning, open distance learning parallelly, and the institution will also have online programs in its own structure. So the student will be able to have the combination of these 3. The student may decide to pursue few courses physically in the college, then few courses open distance learning mode, and few courses online offered by the college. So the student is going to get the benefit of having very less hours to be spent physically for college education. The student will have these combinations opted out as per the time available. Autonomous multidisciplinary degree granting colleges. Every college will have its own degree recognized by the central government. Recognized by the central government means it will be recognized equally as it is recognized for any other university. This is already covered, research intensive universities and teaching intensive universities. That is same for colleges as well. System of graded autonomy, this is also covered. This will be on the basis of accreditation of that affiliated college. Integrated higher education system, it includes professional, vocational, every type of course will be run by the college and by the university. No categories of universities. There will be no categorization whatsoever. Only categorization will be research intensive and teaching intensive. Private, public has no meaning. There will be no deemed university. There will be no public university, nothing of that kind. Only research intensive universities and teaching intensive universities.
It now focusing on few important points. This may be only a summarization. Reduction in school curriculum to core concepts. There will be less burden on students. Integration of vocational education from class 6. Multidisciplinary learning at every level, school, college. So what is going to happen? There will be no curricular, extracurricular and co-curricular subject. There will be nothing of this kind. Because if I am taking physics as my principal subject, then I may choose drawing, I may choose painting, I may choose dancing, I may choose any other performing art, I may choose engineering. One paper, this is possible. So there will be nothing as curricular, extracurricular, co-curricular, everything will be in the multidisciplinary manner. Multiple exit and entries are possible. After first year, student may decide that I'm going to discontinue. The student will get certificate of completion of first year. Then student may join any job and may come back again after 2-3 years, and second year will be completed. The student will get diploma. Then he or she may continue for the last year, third year, and after completing that third year, degree will be awarded. But student will not waste the efforts taken at first year level and second year level. There will be no need of repeating those courses again, because the certificate credits are already with the student, diploma credits are already with the student, and there will be nothing as a gap and repetition of whatever the student has already completed. There will be complete flexibility and uniformity. Student may decide to do one course in SNET and then again going to any other university in Assam, maybe in Gujarat. There will be uniformity and the structure will be so uniform. Student will not have to take any eligibility, will not have to do repetition of whatever is already done. Integration of online courses in the curriculum. Every degree program will have online courses. So there is no need that everything is to be studied by the student in the class physically. Online courses will be integrated in the curriculum itself. There will be National Research Foundation, which will look after the research needs of students as well as teachers. It will be for equitable peer-reviewed research funding for students as well as teachers. The full education will be outcome-based education of international standards, because everything will be graded, everything will be very uniform. So this will be of international standards. So students seeking admissions abroad will not find it difficult. There will be complete credit bank with the student, which can be easily accommodated and transferred wherever at the international level the student wants to take admission for further studies or for research. What is it going to get for students as well as teachers? Now coming to teachers. There will be uniform teacher training. Teacher training is a must, and it will be uniform. May it be for teachers teaching at school level or maybe at college level. Teacher training will be multidisciplinary, because now the colleges, universities, schools are going to be multidisciplinary. So teacher training is supposed to be multidisciplinary. It will be 4-year integrated B.Ed program. It means the student will have to decide right in the beginning, when the student starts learning, whether I want to be a teacher. So if it is already decided, then right from the beginning, 4-year integrated B.Ed program will be implemented, and the teacher will be ready to be the teacher immediately after getting master's level degree. PhD holders, if a PhD holder has not decided right from beginning and has not completed 4-year integrated B.Ed course, then they will have to take credit-based courses in teaching separately before joining the teaching profession. There will be need of and there will be condition of pre-service teacher preparation program to be completed, and only after that the person will be a teacher in higher education system. There is one more condition. National Testing Agency will also test the aptitude of the candidate for being a teacher. In service, continuous professional development will be necessary for college and university teachers.
autonomy will be given. If I'm doing all these things and I'm so capable that I will be given complete autonomy in teaching, assessment, and evaluation. It will be completely teacher based and learner centric. So I may follow different methodologies of teaching, assessment, and evaluation. Once I am capable of teaching, I will be given this autonomy. I will get funding for research from National Research Foundation, and whatever I do, whatever teaching I do, it will be of international standards for sure. Okay, coming to deployment of technology, it is always said that it is very difficult to say, but it is very easy to say, but very difficult to implement because technology hindrances are there. So now those technology hindrances are taken care of. Autonomous body called as National Educational Technology Forum will be the platform for free ideas relating to use of technology to enhance learning, assessment, planning, and administration. In all those four aspects, this technological forum will be giving assistance to every institution. Technological interventions will be provided for the purposes of improving teaching, learning, and evaluation processes. This will be done by the forum. Varied educational softwares will be made available to teachers and to students for making their teaching and learning easy and technology based. There is provision of digital infrastructure, and digital teaching learning platforms and tools made available to each and every institution and to each and every university. There will be content creation and digital repository made available through this technology forum to each and every institution, teacher, and to universities for deployment of sufficient technology which is required for smooth functioning of the higher education. Thank you very much. I think I have completed my presentation in the time given to me. Thank you very much for giving me this opportunity of sharing my views. I hope that I have satisfied the purpose for which I was supposed to be here. Now open to any question, queries if there are. I will like to have some sort of interaction with the participants. Thank you very much. Dear faculty members, in fact, this session was meant for you people. So do you have any queries, any doubt regarding this National Education Policy 2020? We can move ahead with our question and answer session. Madam will be able to answer all your doubts and queries. You can put it in the chat box as well as you can directly ask. You can unmute your mic and you can ask the questions. Please, even students are welcome in case if they have any doubts, because madam, we do have few students also present here. Yes. It is better that we have students in the participation because these will be the probable teachers of future, and they also will have to face these difficulties because of their wards being studied somewhere in the years in which National Education Policy will be fully implemented. Yeah, I hope exactly. Yeah. I hope they will ask 2 questions. Because ma'am, I do have one question. When we talk about multidisciplinary approach, does this will take away the expertise of the teacher or the student? Because learning. No. Yes. Yeah. Please, sir. See, multidisciplinary approach, because it is many times rightly says jack of all and master of none will lead you to nowhere actually. In fact, it is rightly pointed out that you should be topper in whatever thing you are going to do. So what is your thought on this particular approach? Yes. Thank you very much for this question because it is very much to be debated upon. My view is that this system will require a principal component to be studied. So if I am supposed to be expert in any field, I will require those many credits to be accommodated. So I do have to have the expertise in one particular discipline. But what is missing today is that I am expert in one field, but I do not have the exposure of any other field. But that will be possible in the subsidiary, it means non-principal aspect of our curriculum. So
it is taken care of. There will be expertise always insisted upon, and those many credits will be very essential. Otherwise, degree will have no meaning. Degree will require principal expertise to be, those many credits to be accommodated. And the only subsidiary part of that will be available for multidisciplinary. I hope I have satisfied your query. Yeah, yes, ma'am. Very much. In fact, that was the confusion most of the faculty members were having. Few participants, they have personally raised this query, and I think you have clarified the point very wonderfully well to our satisfaction. Thank you so much, madam, for coming to the session. And any more questions from the participant? Do the participant, Dr. Atul sir, do the participant have any more questions? No, sir. No, sir. No, okay, fine. Okay. Ma'am, thank you so much for coming as a chief guest for today's valedictory function. We'll take it as a valedictory function. Yeah, physical distribution of certificate is not possible. Now, we all know that. So, in fact, what we will be doing, we will be issuing this e-certificate maybe tomorrow or day after tomorrow. Once we receive the feedback form from all the participants, and once they subscribe to our YouTube channel, so that those who have not seen our earlier videos can just go through it and submit the feedback form along with the subscription status, so that we'll be issuing them this certificate of successful participation. In fact, madam, we have kept one small MCQ test also in feedback form, which I hope all of the participants will really enjoy it. And it is something related to teaching learning process only, not very difficult. And in fact, there's no cutoff as such. So I hope all the participants will attempt that test, and that will definitely going to gain knowledge from the point of view of NET set examination also. Because the pattern we have taken, the syllabus we have framed was on the basis of NET set pattern. Yeah. So those who are aspiring for NET set to be cleared this year, please concentrate more on national education policy. It was only the introduction which I could cover, but there will be many such aspects which they are supposed to consider before making themselves prepared for the examination. I wish them every success. Thank you very much for again giving me this opportunity of joining with us. SNGT University definitely will be appreciating your efforts of taking online, of conducting online faculty development programs and even other programs which we are doing, you are undertaking. Thank you very much. And this definitely increases the quality of our academic inputs, which we. Yes, ma'am. Thank you very much. And ma'am, there is one request from the participant. They would like your PPT to be shared on the our platform group. So if you can just post it across. Yeah. Yeah. If you want, I will share it with you. I don't mind doing that. Because it is wonderfully prepared PPT which covers almost all the aspect of the national education policy, and I think those who were not able to attend, they can just go through the PPT and see your video. That would be wonderful. I'll send it to you on the WhatsApp number which I have, and that will be available. You can share it with Atul sir. Internally, he will share it with me. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Dr. Atul, over to you, Atul sir. Dr. Atul. Sir, yes, sir. Thanks very much, Dr. Madhvi Kulkarni ma'am. And we move towards a vote of thanks. It is indeed a pleasure and honor to organize the international multidisciplinary 7 days free online faculty development of such a great magnitude. I am indeed grateful to all the members of our association for reposing faith in us. The organization of this FDP has been made possible with the guidance of our seniors faculty, especially Dr. Mukul Burgate sir, who is the lead editor, IJCAMS. Our second day resource person, Dr. Punam Kakkad from Nirmala Memorial Foundation, College of Commerce and Science, Mumbai. Dr. Padmakar Shahare, Associate Professor, Govindrao Vanzari College of Management, Nagpur. Dr. Shyam Shukla, Associate Professor, Bharati Vidyapith, Pune. Dr. Dilip Kumar Singh, Assistant Professor, Raisoni Group of Institutes, Nagpur. Dr. Srinivas Reddy, Principal, Aristotle College, Hyderabad. And again, thanks to today's resource person, Dr. Sunil Ikharkar sir, Associate Professor, Kamala Nehru College, Nagpur, and a special guest on request,
Dr. Madhavi Kulkarni Madam, who is the Vice Principal and Associate Professor of Commerce, SNDT Arts and Commerce College for Women, Pune. I am indeed grateful to all the resource persons, students, researchers of FDP for sparing time and showing blessing on us. My special thanks again to Dr. Mukul Burgate sir and Dr. Madhavi Kulkarni Madam and Dr. Suri Likharkar sir for helping us at all stages of planning and for utilizing their experiences as a past organizing secretary. So I would like to thanks again all the resource persons and today's resource person. So thank you very much. Thank you so much, sir. And sir, you can also put a request regarding feedback form and the subscription of channel. Okay. So that it goes as a reminder. Participants, you will have to please submit the feedback form by today. You will get e-certificates by day after tomorrow. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Thanks. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. So shall we close, sir? Mukul sir.